Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है और आज के अंक में हम आपके लिए आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई तमाम खबरें लेकर आए हैं और हम पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार टीके अरुण। अरुण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है गौरा। Welcome TK to the program. A quick look at the headlines. Key domestic indices close at all-time highs. Sensex ends at 63,915. Nifty settles at 18,972. Centre approves schemes for farmers with a total outlay of over 3.7 lakh crore rupees. And government raises FRP for sugarcane to 315 rupees per quintal. घरेलू शेयर बाजार आज सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचकर बंद हुए। सेंसेक्स 63,915 और निफ्टी 18,972 पर पहुंचा। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय की योजनाएं स्वीकृत की और सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सेंसेक्स की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। देश के प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचकर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 64,000 से ऊपर जाकर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,000 के स्तर के आसपास कारोबार आज कर रहा था। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 499 अंक यानी कि 0.8% ऊपर चढ़कर नए रिकॉर्ड 63,915 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 155 अंक यानी कि 0.8% के उछाल के साथ 18,972 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक में 0.7% की बढ़त और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की तेजी दर्ज की गई। Here's a more detailed look at the stock market and its movement. Key domestic indices hit fresh all-time highs today. The BSE Sensex ended near the 64,000 mark, while the NSE Nifty closed around the 19,000 level. The Sensex rose 499 points or 0.8% to finish at a new record closing high of 63,915. The Nifty also rose 155 points or 0.8% to end at a fresh peak of 18,972. In the broader market at the BSE, the mid-cap gained 0.7% and the small-cap index added just 0.1%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 25 firms appreciated while 5 declined. Tata Motors and Sun Pharma were the top gainers with a rise of over 2% each, followed by Titan, which rose 1.9%. HDFC Bank and Maruti rose 1% each. On the other hand, Tech M declined nearly 1%, M&M fell 0.3% and Bajaj Finserv slipped 0.2%. Among the sectoral indices at the BSE, all sectors ended higher. The capital goods index was the top gainer with a jump of over 1.1%. The power index gained 1%. Auto, healthcare and oil and gas indices rose 0.9% each. The metal and consumer durables indices added 0.8% each. The FMCG index advanced 0.5%. IT, realty and the banking indices were up 0.4% each. The overall market breadth was positive as shares of 2,019 companies rose, while 1,472 companies declined. A total of 147 shares remained unchanged. TK, where is the share market headed after the Nifty and Sensex have shown such a huge movement today? Up. Right. That's, I think, brief to the point. When we say up, we also know that the Nifty is now moving towards, well, if you see the overall graph, despite the corrections, the graph is upwards. What level do you think will the market actually want to change its trend, maybe in the midterm?
See, let's look at why it is going up. All of last year, foreign portfolio investment inflows were actually negative, meaning more money went out than came in. For the year as a whole, some $5.2 billion money went out of India. Yet, the stock market, sort of held on quite strong. In the last quarter also, at the quarter ending March, again money went out, negative. Since then, foreign money has been coming in. And I think that trend will sustain. The fear of a hard recession in the US is gone. Okay. There might be some slowdown, so soft landing is more or less guaranteed. The economic data so far is encouraging, which means that there is more investor confidence in the US and in other Western markets. And I think our portfolio inflows will actually become stronger. We have been adding to our foreign exchange reserves. ये foreign exchange reserve बढ़ रहा है. That is what the latest data shows. That's very encouraging. Which means that this money is coming into the stock market. Yes. So even though FDI is lower than in the previous quarters, the portfolio investments I think will go up, and that is good news for the markets. Okay. अरुण, हम चर्चा को जारी रखेंगे. इस बीच हमारे साथ में अविनाश गोरक्षकर जुड़ चुके हैं, जो कि मार्केट एक्सपर्ट. उनसे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं. हेलो अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. हाँ, गुड इवनिंग. तो अविनाश, जैसा भी हमने जिक्र किया कि शेयर बाजार में आज रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग और क्लोजिंग हुई, और सेंसेक्स की शुरुआत भी आज रिकॉर्ड 63,701 के स्तर से हुई, जबकि निफ्टी जो रहा रिकॉर्ड 18,972 पर बंद हुआ. इस शानदार तेजी के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुत समय के बाद निफ्टी ने 19,000 का लेवल आज क्रॉस किया, 19,000 लेवल का हाई दिखाया, और जैसे आपने कहा कि 18,912 पे क्लोज हो गया. तो करीबन मैं समझता हूं कि इतनी भारी तेजी इसलिए हो गई क्योंकि पहले तो मानसून का जो एक कॉशियस फैक्टर था, मार्केट को अंदाजा और थोड़ा कंफर्ट मिल गया कि मानसून टाइम पे आ चुके हैं. दूसरी बात, करंट अकाउंट डेफिसिट का जो आंकड़ा कल गवर्नमेंट ने रिलीज किया, वहां भी अच्छी खबर आई कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा काफी कम हो चुका है. जी. लिक्विडिटी बाजार में बहुत अच्छी तरह से आ रही है. आज एफआई का आंकड़ा अगर हम देखें तो करीबन 12,000 करोड़ के ऊपर की बाइंग हो चुकी है. हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा सा माल बेचा है, तो लिक्विडिटी काफी कंफर्टेबल है. एसआईपी के फ्लोज भी अच्छे हैं, और प्लस जिस प्रकार के एडवांस टैक्स के नंबर्स अभी डिक्लेयर हुए हैं, मेरा अंदाजा है कि पहली तिमाही जो FY24 की होगी, वहां भी कंपनीज के नतीजे काफी अच्छे आएंगे. तो ये सारी बातें मार्केट्स ने थोड़ा सा अच्छे ऑप्टिमिस्टिकली कंसिडर करके सेंटिमेंट काफी बूस्टअप हो चुका था. तो डेफिनेटली मार्केट में अभी जो जो ट्रेंड है वो एटलीस्ट अभी तो अपवर्ड लग रहा है. हो सकता है कि मे बी अनदर 100-125 पॉइंट के बाद थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट होगा, थोड़ी मुनाफा वसूली होगी, लेकिन ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है. अच्छी कंपनीज अगर आप सिलेक्ट करते हो, लंबा निवेश के बारे में सोचते हो, तो मेरे ख्याल से इक्विटीज में कोई डाउट नहीं कि ये मार्केट में अच्छी आउट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी. अविनाश, आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो यहां पर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा अपने श्रोताओं के साथ में कि आज 125 शेयर्स में अपर सर्किट लगा है, और 158 स्टॉक्स ऐसे रहे जो अपने 52 हफ्ते के यानी कि एक साल के हाई पर भी देखे गए हैं. ये हरा निशान दिखाता है कि मार्केट काफी तेजी से मजबूत हो रहा है. और जनवरी से अगर लेकर के अब तक के रिकॉर्ड की हम बात करें तो लगभग 2,500 अंकों से अधिक का उछाल हो रहा है, और सभी शेयर्स में ये उछाल देखने को मिल रहा है. ये आगे भी जारी रह सकता है क्या? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन तो जारी रहेगा, क्योंकि अर्निंग्स के हिसाब से लग तो रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ अगर इस साल 18-20% आती है तो डेफिनेटली स्टॉक्स में सिलेक्टिवली री रेटिंग आएगी. लेकिन हाँ, इतनी बढ़त के बाद देखिए थोड़ा सा तो मुनाफा वसूली भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. अगर वहां से मार्केट थोड़ा सा भी कंसोलिडेट या यू टर्न मारता है तो गिरावट भी थोड़ी सी सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि करेक्शन भी अभी काफी सिग्निफिकेंट आएगा. लोग जो पेपर प्रॉफिट बना रहे हैं वो थोड़ा सा पैसा वसूल भी करेंगे. तो डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में आपको देखने को मिले, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि 52 वीक हाई मारने के बाद लोग थोड़ा सा मुनाफा वसूल जरूर करते हैं. तो इसमें डाउट नहीं, बट करेक्शन के बाद ऐसा नहीं कि मार्केट पैनिक मोड में जाएगा. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छी कंपनीज पे आप फोकस करिए. जो मुनाफा वसूल करेंगे वो भी डेफिनेटली अपना पैसा वापस मार्केट में जरूर री इन्वेस्ट करेंगे. तो ये सिलसिला चलता रहेगा. So Avinash, I think sentiment is good, sentiment is high. So just now wanting your expert inputs on, and I think I'd asked TK also this question, and we will come back to it later with him.
Till what level do you feel that the Nifty will maintain this upward bias? I mean, there's a clear bias, so there's a movement up, there's a correction, but there is an upward movement. Do you think at what level can we expect maybe a trend reversal? No, I think trend reversal, as I told you very clearly, that currently the market is in a very strong bull market kind of grip. 19,100 on the upside is supposed to be a very crucial level. If the market is not able to cross 19,100 on the Nifty, then I think you could expect a significant correction. I think on the downside now, 18,700, 18,750 is a strong support. So I think we'll have to wait and watch. In fact, today, the big positive surprise also was the large FI inflow of almost 12,000 crores plus in the market. So that was also another factor which led to a rally. In fact, despite the fact that today was expiry day, we saw all-round buying across all the sectors, whether it was large caps or whether it was small and mid caps. So I think, you will see some sort of profit booking at least in the coming week. When you say 19,100, is there a time, do you give a time for it, 1 month, 2 months? When would we know that the market is, yes, coming down but going back? Is there a resistance level at that, and what is the time limit? No, I think you could see this in the next, say, 2 to 3 weeks, because as the corporate results start, I think you will start seeing the result season for June quarter, starting possibly from the 2nd or 3rd week of July. So, probably at that point of time when companies start reporting numbers, the market will, discount, the stock prices based on the earnings reported, because in most cases, most of the stocks within the small cap or the mid cap or even large cap stock have actually jumped significantly. So, whenever stock prices jump in excess of the kind of earnings growth they report, obviously there is some profit booking expected. So I think we'll have to wait for the Q1 numbers, quarterly earnings season to start, which should possibly be from the 2nd or 3rd week of July. At that point of time, possibly we could see a little bit of profit booking if the numbers are not up to expectations. So for medium and long-term investors, do you see a sectoral pattern? Because, sometimes we see that this time pharma, energy, auto, top gainers. The banking index also went up this time. But overall, if you see the past few weeks, it's really not been able to match up to the performance of the other sectors, and hoping that maybe in July it will lead the rally. Do you think that people who've invested in areas where, they could say, let's wait for 3 months, maybe my pharma stock will go up, then my metal stock, how long should they, is there a pattern to it, or, it's easy to get heartened and disheartened very fast? No, I think, my sense is that now sectors which I think where the growth momentum would continue, at least for the next 6 to 12 months, are sectors like automotives, capital goods, real estate. I think sectors like pharma also are now, starting seeing a lot of value buying. FMCG has seen a lot of interest. So I think, these 3-5 sectors are definitely sectors which investors should watch out. I think metal sector, if you ask me, probably, the momentum was strong today and some speculative buying was responsible for the upsurge in price. But if you look at the metal kind of markets, I think still China has not remained a very big player in the global metal market. So I think metals may definitely underperform, and IT companies also could underperform because IT has been facing a lot of headwinds. So I think, you'll have to be very selective and very careful on allocating your money, because I think at these levels, the market definitely, richly valued. I think at the end of the day, it's all about the price appreciation and at what point of time the investor enters the stock. So I think a decent correction would provide a good opportunity for retail investors to actually accumulate, stocks for the longer term. But at this point of time, you have to be very selective. So you said buy on decline, and if people are purchasing now on a decline, good solid stocks, how long should they hold them for? I think for the next 12 to 15 months, I think investment horizon will have to be at least for the next 12 to 15 months, because, in the near term, the first half or this year for the markets have been pretty solid. The second half is something now which is going to be pretty challenging, because we have already touched a new high in the very first half of this calendar year. So I think the second half will be very tricky as well as very challenging. So I think next, 8 to 12 months, at least minimum positional view on certain category of stocks, which should give a decent risk reward. I think it would be very tough for intraday traders or short-term traders to make money in this market. So I still believe that there's good value to be made, but provided the horizon is at least, at least 12 to 15 months. Right. अविनाश, निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 44,500 को पार कर गया, एक नया आंकड़ा इसने छुआ है और 30 मई के बाद से एक नई ऊंचाई इसमें देखी जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये तेजी इसमें भी हम आगे देखेंगे? 45,000 जो काफी समय से वेट किया जा रहा है, उस पर हम पहुंच सकते हैं अभी हाल फिलहाल? देखिए, पहली बात तो बैंक निफ्टी में कल भी हमने अच्छी भरपूर तेजी देखी। वो इसका मेन कारण ये था कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी से क्लेरिफिकेशन आया कि 13 जुलाई से एचडीएफसी का स्टॉक ट्रेडिंग में बंद हो जाएगा और
बैंक में ये एक कंबाइंड एंटिटी मर्जर फाइनल हो जाएगा। तो मार्केट को अभी काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि एचडीएफसी बैंक में पूरा वैल्यू क्रिएशन आने वाला है और यही रीजन है कि बैंक निफ्टी में आपको अच्छी तेजी देखने को मिली। हमारा मानना है कि एचडीएफसी बैंक में आपको अच्छी रीरेटिंग इसलिए भी देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत समय तक ये मर्जर पेंडिंग था, अभी फाइनल अप्रूवल आ चुका है। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा बैंक निफ्टी को खिंचवाने के लिए और होपफुली जब एचडीएफसी बैंक एक प्रॉपर कंबाइंड एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करेगा, जहां पे फाइनेंशियल्स ऑफ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक कंबाइंड करके मार्केट को मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से और भी तेजी आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि अगले 2 महीने में पॉसिबली जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने में जब भी ये नंबर्स कंपनी प्रेजेंट करती है कंसोलिडेट बेसिस पे, तभी शायद बैंक निफ्टी को ज्यादा जोर पकड़ने का रुख मिलेगा। अदरवाइज काफी समय तक वो कंसोलिडेट कर रहा था, बैंकिंग स्टॉक्स भी कंसोलिडेट कर रहे थे। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसी कारण से लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मीडियम टर्म में तेजी लग रही है। जी अविनाश जी, हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अरुण जी, अभी हमने तमाम ये चर्चाएं की खासतौर पर शेयर मार्केट से जुड़ी हुई। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जो हमने कल की अगर हम बात करते हैं तो डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P में बम्पर उछाल आया था, उसके साथ उछाल के साथ बंद हुए। इसका असर घरेलू बाजार पे बहुत ज्यादा पड़ा है, सकारात्मक रूप से इसको लिया गया है। आपको लगता है कि ये तेजी वर्ल्ड वाइड बनी रहेगी? मेरे ख्याल से बनी रहेगी। देखिए, यूरोप में रिसेशन है अभी, लेकिन इतनी बुरी तरह की रिसेशन नहीं है जी। अमेरिका में अभी तक रिसेशन आया नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत रिसेशन जेंटली आए तो उनका हाल ठीक होगा। तो मतलब फेड को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की प्रेशर से उसको मुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी तक वहां स्लो डाउन इतना नहीं हो रहा है जी। ये देख के लोगों को खुशी भी है, लेकिन थोड़ा घबराहट भी है कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही रहेगा। इसकी वजह से मार्केट्स की हालत ऐसे ढीला रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादातर जो पैनिक था पहले वो चला गया है। जब मार्केट में कॉन्फिडेंस है, लोग पैसा बाहर निकालने की स्थिति में है। तो मेरे ख्याल से फॉर 3 रीजंस, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इंडिया स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस आर नॉट एक्सेसिवली हाई, especially if you look at the future growth prospects. Okay. Therefore, more money is going to come to India in the near term. So this will take the markets up. I can't predict what level Nifty will reach or Sensex will reach, but मेरे ख्याल से there will be upward momentum for some more time. Apart from what technical levels are prescribed by technical analysts, I think the market will keep going up for some time. Right. And one more factor. The recent developments in Russia were one of Putin's closest associates staged a rebellion will likely lead to an ending of the Ukraine war sooner rather than later. Okay. Because for Russia, it is clear that this kind of a risk of a prolonged war carries additional risk of internal rebellion, dissatisfaction, and more such revolts. So handling on 2 fronts would be So I think there will be greater pressure on Putin to end this war, and there might be similar pressure on the Western allies who have been pouring money into Ukraine only to see their wanted counter-offensive sort of peter out. It is not going very well. So मेरे ख्याल से if there is this move to end the war faster, that will be good news for the global economy from another perspective. तो मेरे ख्याल से and if you look at the Indian domestic economy, हमारा क्रेडिट ग्रोथ और अच्छा हो रहा है, इज बीन ग्रोइंग स्ट्रांग आफ्टर वर्चुअली नो ग्रोथ फॉर मोर देन अ ईयर, एंड सो ऑल दिस इंडिकेट्स दैट वी आर गोइंग टू सी good economic activity within the economy. We should find reflection in the stock market, especially given favorable global climate. और अब एशियाई और यूरोपीय बाजार पर नजर डालते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। जापान के निक्केई सूचकांक में लगभग 2% की बढ़त दर्ज हुई। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में आज करीब करीब सपाट कारोबार हुआ। इस बीच चीन की औद्योगिक कंपनियों के मुनाफे में बीते 5 महीनों के दौरान पहली बार दोहरे अंकों में गिरावट आई है। जनवरी से अप्रैल के बीच मुनाफे में 18.8% की सुस्ती देखी गई है। मई में खुदरा बिक्री और निर्यात सहित कई मोर्चों पर गिरावट देखी जा रही है और युवाओं की बेरोजगारी दर 20.8% तक पहुंच गई है। हांगकांग के हिंग सेंग और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.1% की तेजी आई, लेकिन दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में आज 0.7% की गिरावट दर्ज हुई।
यूरोपीय शेयर बाजार की हम बात करें तो अमेरिका की आर्थिक खबरों ने काफी हद तक चिंताओं को दूर किया है। हालांकि जापानी मुद्रा येन पिछले 15 वर्षों में यूरो के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इस बीच फ्रांस का खैर करीब 1% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। जर्मनी का डेक्स 0.9% ऊपर आ गया और लंदन का FTSE 100 0.7% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। A look at the U.S. markets. After the recent losing streaks, the U.S. markets rebounded yesterday as upbeat economic data allayed investor fears about a recession. The Dow Jones Industrial Average snapped a 6-day losing streak. The blue chip index rose 212 points, or 0.6%, to 33,927. The S&P 500 gained 50 points, or 1.2%, to 4,378 after falling in 5 of the last 6 sessions, while the tech-heavy Nasdaq Composite added 220 points, or 1.7%, to 13,556. Reports showed new orders for key U.S. manufactured capital goods rose unexpectedly in May, and sales of new single-family homes surged in the same month, while U.S. consumer confidence increased to a near 1 to 1.5 year high in June. More economic data is expected this week, including inflation as well as Fed Chair Jerome Powell's speech at the European Central Bank Forum in Portugal, which could provide cues on interest rates. Powell's hawkish comments last week stalled a U.S. stock rally that had pushed the S&P 500 and Nasdaq to an over 1-year high and the Dow Jones to a 6-month peak. TK, upbeat U.S. economic news. This is battling with major global concerns, as you can see. And, an embattled yen, which hit a 15-year low, with Japan hinting that a monetary intervention to prevent further losses is in the offing. Now, do you see regional factors today playing a more important role rather than just global factors in determining how local markets or regional individual country markets move? Because earlier the linkages were strong, but here we see that everybody is not moving in tandem. Even then, there is so much liquidity that has been created over the last 10, 12 years. There's so much of liquidity, trillions of dollars of liquidity has been created. And so long as that remains in the system, the global linkages will remain robust. Whenever money moves or is in a position to move from one market to another in search of small favorable gains, money will continue to move, and that is what will primarily determine the way markets move. So you see these are minor little movements up and down here, yes. But by and large there's enough liquidity globally yes. to sustain markets across regions. You yes. feel that? Yeah. All right. और श्रोताओं को बता दें, सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आज कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2023-24 के लिए गन्ने के खरीद मूल्य को 313 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया। ये अब तक का गन्ने का सर्वाधिक खरीद मूल्य है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करने और उनके स्थान पर जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। सल्फर लेपित यूरिया स्कीम के तहत 3,68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना के तहत ये व्यवस्था की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना के बिल को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NRF की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता करेंगे। तो अरुण जी, आज ये जो फैसला किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, गन्ने के खरीद मूल्य को बढ़ाया गया, 313 रुपए प्रति क्विंटल किया गया और ये अब तक का सर्वाधिक खरीद मूल्य माना जा रहा है। तो इससे किसानों को किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए, ये इतना कोई हैप्पी स्टोरी नहीं है, क्योंकि हम गन्ने का प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, किसान ज्यादा प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, मिल से खरीदते हैं लेकिन उनको पैसा देते नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं। क्योंकि हमारा शुगर का प्राइस अंदर राष्ट्रीय विपणि की जो प्राइस है उससे बहुत बड़ा है। Okay. पिछले साल हम किलो पे 10 रुपया सब्सिडी देके कुछ शुगर एक्सपोर्ट किए, यही हमारा हालत है। फिर हम उसका प्राइस बढ़ाते जाएंगे तो फिर सब्सिडी भी बढ़ाना पड़ेगा अगर हम उसको बेचना है, नहीं तो हमें देश के अंदर बहुत बड़ा बफर स्टॉक चीनी का रखना पड़ेगा। मतलब खरीदेंगे और उसको स्टोर करेंगे ताकि मार्केट में थोड़ा कम रहे और प्राइस का डाउनवर्ड प्रेशर हम कर पाएंगे। अगर शुगर कंपनी और फार्मर के बीच में कोई ये बैलेंस नहीं होता है कि जितना शुगर बिकता है उसके अनुसार शुगर केन प्रोड्यूस होना चाहिए, हम प्रॉब्लम में हैं।
तो ये सरकार की तरफ से यूनिलैटरली प्राइस बनाना, और देखिए ये तो केंद्र गवर्नमेंट की एफआरपी है, उसके ऊपर यूपी के गवर्नमेंट और एक रिकमेंडेड प्राइस करेंगे, इसके ऊपर होगा, तो मिल्क को जो खरीदना पड़ता है उसका प्राइस इससे भी बहुत ज्यादा होगा। वो अनवायबल सिचुएशन है हमारे शुगर इकोनॉमी के लिए, ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। So somewhere earlier when MSPs were set, and we said that one of the purposes of setting an MSP is also to, rationalize crop growing pattern. What is the balance? Bring in, more balance into what is grown, which is more profitable. What is the produce per acre? And here, what we are hearing you say, and do correct me if I'm wrong, is that somewhere how we are seeing pricing and balancing. And even if we are saying that we want to export it, we have to have the subsidy component to the export to say what is the actual cost of it to us. Yes. This is not MSP. When चावल के लिए, गेहूं के लिए MSP होता है, उसका मतलब है कि सरकार खरीदेंगे, राइट, तभी तो सपोर्ट होगा। राइट, सिर्फ प्राइस अनाउंस करने से कोई उनको फार्मर को फायदा नहीं है। लेकिन शुगर केन में सरकार की कोई खरीदारी नहीं है। शुगर केन इज परचेज ओनली बाय द मिल्स, तो इट्स अ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, इट्स अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके उधार पे एक स्पेशल एडवाइस प्राइस स्टेट गवर्नमेंट अपने आप पर लागू करे। इट्स नॉट मैंडेटरी। Well, milks have to follow that. Okay. But it's not being purchased by the government. So that's why it's not called a minimum support price. Right. If your government announce the minimum support price, then the government is actually procure at that price so that the farmer actually gets that support. Right. और दूसरी बात है ये सब्सिडी की, ये देखिए ऑर्गेनिक सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि इससे हमारा सेहत ठीक हो जाएगा और जमीन भी ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ये ध्यान में रखना चाहिए कि श्रीलंका के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उनका फूड क्राइसिस है, उनका एक मुख्य कारण ये था कि उन्होंने तय किया कि हम फर्टिलाइजर छोड़ देंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ले जाएंगे। ये अगर दुनिया में अब सारे फर्टिलाइजर बंद करते हैं और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, करीब 3 बिलियन लोगों को मरना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी इतनी गिर जाएगी। ये ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग के पीछे भागना गलत चीज है। राइट, फाइन। I think that's a valid point. We'll take a quick look at the oil prices. Global crude oil prices rose today after an industry report of a larger than expected drop in U.S. crude inventory suggested robust demand and helped offset worries over further interest rate hikes. Brent crude oil futures was up 48 cents to $72.74 a barrel, while U.S. crude gained 31 cents to $68.01. गोल्ड की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार वाले सोने के भाव में आज 156 रुपए की गिरावट आई और ये 57,951 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। अंतिम समाचार मिलने तक जुलाई अनुबंध वाली चांदी 575 रुपए लुढ़ककर 68,766 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वैश्विक बाजारों की हम बात करें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,915.50 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था और चांदी $22.85 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिन में देश के बाकी हिस्सों में पहुंच जाएगा। मानसून आज उत्तरी अरब सागर और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ा। अगले 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। A small item about the Reserve Bank of India, which has informed that the gross non-performing assets GNPA ratio of scheduled commercial banks has fallen to a 10-year low of 3.9% in March 2023. TK, quickly, a 20-second response on what does this really mean? It means that banks are now in a position to start lending again. They have bad loans on their books. Their quantity has come down. The books have been cleaned. Okay. And therefore now they will be able to start lending again. Okay. And this is good news for industry when they want to raise loans on the banks to start investing once again. Right, perfect. जी अरुण जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, TK, for your time on this program. And now, before we close, a reminder of the headlines. Key domestic indices close at all-time highs. Sensex ends at 63,915. Nifty settles at 18,972. Centre approves schemes for farmers with a total outlay of over 3.7 lakh crore rupees. And government raises FRP for sugarcane to 315 rupees per quintal. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra, Mantra.
Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.